Alright, guys, I'm back. This is page 28 and 29 of Act 1, Scene 1. Bassanio just told Antonio about how he's ruined his finances by living a lavish lifestyle, more than he can afford. And he says he's got a grand plan to get rid of all his debts. So Antonio tells him, I pray you, Bassanio, let me know it. It को circle करो जल्दी से और वहाँ पे लिखो question mark. What does it refer to? So it refers to the plots and purposes, keywords, that Bassanio wanted to unburden. Unburden matlab share with Antonio. And if it stand, again, it over here is the plan. If this plan of yours is as you yourself are, matlab honorable. So the line is, and if it stand as you yourself still do within the eye of honor, which means if your plan to get rid of all your debts इज एज ऑनरेबल, मतलब अगर तू कुछ गलत हरकत नहीं कर रहा है, अगर तू किसी को चीट करने का नहीं सोच रहा है, तू कुछ वियर्ड सा प्लान नहीं सोच रहा है, देन एंड इफ योर प्लान इज ऑनरेबल देन बी अश्योर्ड मतलब बी श्योर दैट माई पर्स कीवर्ड्स, पॉइंट नंबर 1, माई पर्स मतलब मेरा पूरा पैसा, माई पर्सन मतलब मी माई सेल्फ, एंड माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स मतलब ऑल माई रिसोर्सेज दैट आई कैन गैदर आर एट योर डिस्पोजल. बट एट योर डिस्पोजल लाइन नहीं है, वहाँ पे लाइन है लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन्स. लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन्स मतलब दे आर अवेलेबल फॉर यू. So if you share your plan with me and if your plan is honorable, then Bassanio, my paisa, myself and everything that I can afford to do for you will be available for you. Alright? So just let me know your plan. So this dialogue of Bassanio is super duper important. Act 1 Scene 1 जब भी टेस्ट में आता है घिसा पिटा सा ये डायलॉग एक है जो हर टेस्ट में पूछते ही है. ओके, What childhood example does Bassanio now refer to? So ये जो dialogue है is Bassanio sharing his plan. What plan? Plan to get rid of his debts. But सीधे तरह से बात नहीं करता, वो घुमा फिरा के बोल रहा है because he is very embarrassed. You know, if you keep going to a person again and again पैसा मांगने के लिए और हर टाइम तो कुछ ना कुछ एक नया एक्सक्यूज बना के जाता है, इवेंचुअली तेरे को भी अंदर से शर्म आ रही है, बट यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू आस्क दैट पर्सन फॉर मनी. सो यू नो यू ट्राई टू लाइक बीट अराउंड द बुश, you try to justify why you need the money. That's what Bassanio is doing. He is shamelessly going back to Antonio for money every time, but each time he's going, he has a separate way of asking for money. So this time he's acting very guilty. Okay, so he says, in my school days when I was a child, when I lost one shaft over here is arrow, but if you write arrow in the exam you lose marks. I want the keyword is shaft. ओके, सो अपने यहाँ कैसे गली क्रिकेट में अपन जब क्रिकेट खेलते हैं और एक शॉट मारते हैं और बॉल जाके घूम जाता है कहीं पे. ओके, वी सॉ द बॉल लैंडिंग समवेयर, वो कार के नीचे गया, टायर के पीछे हुआ, कहीं तो होगा, अपन जाके ढूंढते हैं, वहाँ नहीं मिल रहा है. अभी नेक्स्ट बंदा नेक्स्ट शॉट उसी डायरेक्शन में मारता है. इस बार अपन लोग बॉल को बहुत केयरफुली देखते हैं कि बॉल कहाँ जाके गिरा है. अब वो बॉल अगर अपने को मिल जाता है तो उसी बॉल के आसपास वो पहला वाला बॉल भी शायद मिल जाए, चांस है. ओके, बिकॉज दिस टाइम वी वॉच्ड मोर केयरफुली वेयर द सेकंड बॉल इज गोइंग. Now, उस ज़माने में they wouldn't play cricket, they would shoot arrows. So he says, if I would shoot an arrow and if I would lose one shaft is the arrow, I shot his over here is the arrow. So its fellow मतलब another arrow. Underline कर लो, his fellow को underline करो, लिखो second arrow. So I would shoot the second arrow of the self same flight मतलब in the same way. Self same flight मतलब in the same way. The self same way मतलब same speed. With more advised watch, with a more careful watch. तो अगर मैं इसे एक एरो कहीं जाके घूम जाता है तो मैं दूसरी एरो भी उसी डायरेक्शन में शूट करूंगा, बट दिस टाइम आई विल वॉच वेरी केयरफुली वेयर द सेकंड एरो इज लैंडिंग टू फाइंड द अदर फोर्थ, टू फाइंड द अदर वन फोर्थ मतलब टू फाइंड द फर्स्ट वन आउट. एंड बाय एडवेंचरिंग बोथ, अंडरलाइन द वर्ड एडवेंचरिंग, रिस्किंग. By risking both, I oft is often found both. मतलब अगर मैं इसे एक घूम जाता हूँ और मैं दूसरे को रिस्क करता हूँ, you know, losing the second one is a risk. What if you can't find it? Then you'll end up losing both. But more often than usual, I end up finding both my arrows, the first one and the second one. Now, I urge मतलब I'm telling you this childhood proof because what follows, what I'm about to tell you now, जो मैं तेरे को अब बोलने वाला हूँ, is pure innocence. Is a very innocent plan. मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है. I owe you much, Antonio. Okay, I am really grateful to you. I owe you much, मतलब I'm very grateful to you. And like a willful youth, unlike willful youth, willful is a deliberate. Youth over here is a careless young man. So willful youth, the two words together is like a careless young man. That which I owe to you is also lost. मुझे पता है मैं तेरे को 100 रुपये owe करता हूँ. Okay, I have to return 100 रुपये back to you.
Now, I have not been returning that money to you. Finally, I managed to earn 100 rupees and I'm on my way to return that 100 bucks to you. But on my way, I'm very tempted by a gambling match that's happening. And I end up gambling the 100 rupees and losing that. So I know I'm supposed to return the 100 to you. But instead of returning it to you, I end up losing the 100 also. And I know I'm doing it. I know I'm careless. So I'm very sorry. I can't stop myself. Okay. But if you please, if you are willing, but एक last time Antonio, अगर तू okay है इस बात के साथ, to shoot another arrow, it's a metaphor. He's not literally asking Antonio to shoot a third arrow. Arrow here is metaphor for money. Okay, if you are willing to invest money with me one more time, okay, so if you please to shoot another arrow the same way which you did shoot the first, मतलब जिस तरह से पहले तूने मेरे पे पैसे स्पेंड किए हैं, अगर एक और बार, one last time if you could lend me money, then I do not doubt, I'm very sure that as I will watch the aim, as I'm gonna be very careful, और को अंडरलाइन करो यहाँ पे, और to find both, ये जो और है that's either. ओके, ओल्ड इंग्लिश में रेपिटेटिव होता है, बट और ओवर हियर इज ईदर. आई ईदर फाइंड बोथ. बोथ मतलब पहले का जो पैसा लूज हो गया वो भी तेरे को लाके दूंगा, और ये वाला जो पैसा तू इन्वेस्ट करा है वो भी लाके दूंगा. सो आई ईदर फाइंड बोथ और ब्रिंग योर लैटर हैजर्ड. ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो, पहले का पैसा शायद ना भी ला पाओ, बट ये वाला जो तू मेरे पे इन्वेस्ट करेगा, इन दिस केस इट्स 3000 डकेट्स. ओके, सो ये वाला जो पैसा तू मेरे पे इन्वेस्ट करेगा वो तो मैं डेफिनेटली तुझे लाके दूंगा. सो अंडरलाइन लैटर हैजर्ड. Latter matlab the second amount, the new one, the latest amount. Hazard is what you're risking on me, the amount. So latter hazard over here together refers to the money that Bassanio needs from Antonio this time, which we know because you've done the scene ahead is 3000 ducats. तो अब bracket में लिख दो, latter hazard is 3000 ducats. So or bring your latter hazard back again. So और दो बार आया, I'm repeating again, ये जो or to find both है, और पहला वाला or is either, और जो second वाला or है वो और ही है. ओके, सो आई ईदर फाइंड बोथ द मनी, मतलब पहले का जितना पैसा था वो भी लाके दूंगा, ये वाला लाके दूंगा साथ में, या फिर ये वाला पैसा तो तुझे लाके दूंगा और जो पहला वाला पैसा है वो मैं धीरे 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 इंस्टॉलमेंट्स में चुकाऊंगा. सो द लास्ट लाइन इज आई विल थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट. आई विल थैंकफुली रेस्ट डेटर मतलब आई विल स्टे इनडेटेड, मतलब आई विल ऑलवेज बी इन योर कर्ज, आई विल ऑलवेज बी इनडेटेड टू यू फॉर द फर्स्ट मतलब फॉर ऑल द मनी यू स्पेंट ऑन मी अर्लियर. अब एंटोनियो थोड़ा इरिटेटेड है उस पर. उसने एक सिंपल सवाल पूछा था, भाई वो छोकरी का नाम क्या है. इधर बसानियो छोकरी के नाम के बारे में बोलने से के बदले पूरा घुमा फिरा के एक स्टोरी बता रहा है. ओके, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा. सो एंटोनियो इज डैम इरिटेटेड. लाइक रोज एक बार क्यूट लगता है, दूसरी बार क्यूट लगता है, हर टाइम तू सेम ही पैत्रा मेजा ट्राई करेगा, इट्स वेरी इरिटेटिंग. सो एंटोनियो टेल्स हिम, यू नो मी वेल, यू नो मी वेरी वेल बसानियो, एंड यूर इन बट स्पेंड, अनलाइक द वर्ड स्पेंड, वेस्ट. यू आर वेस्टिंग टाइम to wind about my love with circumstance. Wind about my love, matlab to test my love. You are testing my love for you. You are doubting my love for you by giving me circumstance. Underline the word circumstance. Upar arrow draw karo childhood example pe. So the word circumstance means example. And the example over here that I am referring to is a childhood example of the shaft. So exam mein RTC mein Antonio ka dialogue aa sakta hai. And I'll ask you what does circumstance here refer to. And you'll have to give me the allusion of the childhood example. वो पूरा example repeat करना पड़ेगा, ठीक है. So you know me very well, you know that I love you, but you still doubt my love because you're beating around the bush. तो घुमा फिरा के बात कर रहा है. So you're doubting my love by giving me weird examples. And out of doubt, definitely out of doubt मतलब surely you do me more wrong. You are right now hurting me more. Do me more wrong मतलब you're hurting me more in making question मतलब doubting. Underline the words, the phrase making question मतलब doubting. In doubting my uttermost मतलब my feelings for you. Uttermost, underline. लिख लो भाई, लिख लो, ऐसे सुनो मत सिर्फ. Uttermost मतलब my feelings for you. So the line, in making question of my uttermost मतलब you are doubting my feelings for you than if you would have made waste of all I have. So the पूरी line ना जब साथ में पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा. The whole line is you do me more wrong in making question of my uttermost than if you had made waste of all I have. That's the entire line, which in simple language means you're hurting me more right now by doubting my love for you than you would hurt me if you end up spending all my money. मतलब तू एक आध बार मेरा सारा पैसा वेस्ट कर ले, मेरे को बुरा नहीं लगता है, बट ये जो तू मेरे प्यार को, मेरे फ्रेंडशिप को, मेरे दोस्ती को डाउट करता ना कि शायद एंटोनियो मेरी मदद ना करे, दैट्स अ डाउट. तो दैट हर्ट्स मी मोर. Then do but say to me. तो पॉइंट पे आए यार, बात खत्म कर अभी. So do but say to me what I should do.
मेरे को बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं. That in your knowledge may by me be done. That according to you, in your knowledge मतलब according to you may by me be done. मतलब that I can do for you. So tell me Bassanio, what is it that I can do for you? And I'm pressed unto it. Unlike the words pressed unto it, I'm obligated. Obligated मतलब I'll surely do it. मतलब तू बस बता यार, तू बोल तुझे क्या चाहिए मैं तेरे को करके दूंगा. Okay? Therefore speak. A buck. Buck मतलब बोल यार तेरे को क्या चाहिए. Alright, we are on the last side of Act 1, Scene 1. I hope you guys understood till here. Please just pause my video here. Video नहीं audio. Pause करो. शांति से यहाँ तक एक बार देख लो. Last dialogue अपन कर रहे हैं. And last dialogue is super duper important. Alright? I'm gonna pause my video as well. पानी का एक सिप मार रहा हूँ. वापस से चालू कर रहा हूँ. ठीक है? Last dialogue. तुम लोग भी यहाँ तक देख लो फटाफट. Alright guys, Bassanio's dialogue, okay, वो finally उस छोकरी के बारे में बात करने वाला है. This is the first time in the play. Now I know a lot of teachers have taught you already, you know who I'm going to talk about, but this is the first time in the play that the heroine is introduced to us in a dialogue, alright? So Bassanio speaks about Portia, वो है अपनी चिकनी चमेली, okay? So in Belmont मतलब Belmont is a fictional place, by the way. This entire setup, Merchant of Venice, is the two locations में पूरा play हो रहा है. एक वेनिस जो एक्चुअली है और एक बेलमॉन्ट जो उस टाइम पे नहीं था, एक फिक्शनल आइलैंड है. ओके, सो इन बेलमॉन्ट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट. द वर्ड्स ऑफ इंटरेस्ट हियर, रिचली लेफ्ट, इसको अंडरलाइन करो. रिचली लेफ्ट मतलब शी इज लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस. सो शी इज इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी, फॉर्चून, एंड शी इज फेयर. डिस्क्रिप्शन ऑफ पोर्शिया, कीवर्ड्स. फेयर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस जहां भी वर्ड फेयर आता है, इट्स ब्यूटिफुल. ओके, शी इज प्रिटी. So she's fair and fairer than the word, and she's more prettier. She's prettier than the word pretty. She's more beautiful than the word beautiful. Okay. Point number 1. Point number 2. She's of wondrous virtues. Arey, not only is she pretty, but also of wonderful qualities. Virtues, matlab qualities. So she's got brilliant qualities. Also, sometimes from her eyes, I did receive fair speechless messages. Aankhon ki गुस्ताखिया माफ. फाइन, आई वोंट सिंग, बट यू नो ये वो वाली बात है. ओके, द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अपन लोग ने प्ले बीच, वी आर स्टार्टिंग इट एज अ प्ले, बट ऑब्वियसली ये कैरेक्टर्स ऐसे ही पैदा नहीं हो गए ना, इनकी बैक स्टोरी भी है. सो ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये लाइन से अपने को पता चलता है कि बसानियो हैज मेट पोर्शिया. ऐसा नहीं है कि वो पहली बार मिलने जा रहा है, वो लोग कभी ना कभी मिल चुके हैं. अब कब मिल चुके हैं वो भी तुम लोग को पता चल जाएगा इन सीन 2. ओके, सो इन सीन 2 नेरिसा जब पोर्शिया को टीज करती है, वो भी ये बात मेंशन करती है दैट पोर्शिया हैज मेट बसानियो. ओवर हियर आल्सो इट्स प्रीटी क्लियर दैट बसानियो हैज मेट पोर्शिया, एंड ही टेल्स एंटोनियो दैट लुक यार, द फर्स्ट टाइम आई मेट हर ना यार, द वे शी लुक्ड एट मी, उसने आंखों से मुझे बता दिया दैट शी हैज फीलिंग्स फॉर मी. सो there's a girl who's richly left, point number 1. She's fair and fairer than the word, point number 2. She's of wondrous virtues, point number 3. And from her eyes I've received fair, matlab loving, speechless messages. Because we are living in an orthodox age. Back then, Elizabethan age, women were not allowed to express their feelings. So though she didn't say it, it was speechless. Speechless matlab silent messages I received from her eyes. Messages of love. Alright? Her name is Portia. Oh ho ho ho. And she is nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus's Portia. A reference to Julius Caesar. Alright? In the play Julius Caesar, Cato, okay, the reference is given on the side. If you guys bother to look at lines 170 ka reference, you'll see here, Portia is compared to Portia and Julius Caesar, who was the daughter of Cato. Cato was a Roman statesman and a nobleman. And the wife of Brutus. Alright? So she's the daughter of Cato, but wife of Brutus. So Cato की जो बेटी थी, she had married Brutus. Brutus was the best friend of Caesar, who also betrayed him. All right, and she was a very powerful character in the play. And Brutus was the leader of the conspiracy against Julius Caesar. All right, so it's like saying, let's say मैं एक बंदे से पूछ रहा हूँ, boss, what's your girlfriend's name, dude? And he says, अरे my girlfriend's name is Deepika. Oh, and she is no lesser than the Padukone. मतलब वो एकदम दीपिका पादुकोण जैसी ही है क्वालिटीज में, लुक्स में, बैडमिंटन भी वैसा ही खेलती है, एक्टिंग भी वैसी करती है भाई, एकदम उसी की तरह है. सो नॉट ओनली नेम बट लक्षण भी वैसे ही है. दैट सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. ऑलराइट, दिस चिक्स नेम इज पोर्शिया एंड शी इज नथिंग लेस देन दैट पोर्शिया. यू नो दैट पोर्शिया फ्रॉम जूलियस सीजर. ओके, सो her name is Portia, nothing undervalued, matlab no lesser than.
no lesser than Cato's daughter, Brutus's Portia, that's a reference to Julius Caesar, nor is the wide world ignorant of her worth. और यार एंटोनियो, बात ये है ना, मैं इतना जल्दबाजी में इसलिए हूँ बिकॉज सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ जो उसको चाहता है. वो पद्मावती है. पूरे दुनिया का हर अलाउद्दीन खिलजी उसको ढूंढना चाहता है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू हर बिकॉज द होल वर्ल्ड नोज अबाउट हर. When I say the whole world knows about her, in simpler language, I'm saying the world is not ignorant about her. Not unaware about her. So the lines over here are, nor is the whole wide world ignorant. Ignorant unaware. Nor is the world unaware. The world is aware of her worth, of her importance. For, why do I know this? Because. For because. The four winds four directions. North, south, east, west. North, south, east, west. For the four winds blow in from every coast, renowned suitors. The line simply means from the four directions, well-known suitors are coming for a swayamvar. Okay, इसके साथ शादी करने के लिए लोग proposals लेके पूरी दुनिया के चारों कोने से लोग आ रहे हैं. And उसकी जुल्फे, oh, sunny locks. Sunny is golden, alright. Locks are locks of hair. Hang on her temples. The word temples here, our forehead is forehead. Okay, now I know a lot of people who are very limited in their approach towards English would say, but sir, temple तो sir मंदिर होता है ना. But English में हर word के multiple meanings हो सकते हैं. Alright, so यहाँ पे temples is not मंदिर, temples is forehead. Okay, so her golden locks of hair which fall on her forehead. Okay, in I think girls would understand bangs. So the hair that falls over your forehead. Alright. So her golden is like golden fleece, circle golden fleece. I promise you this, अगर ये सीन टेस्ट में आता है, ये सवाल आएगा ही आएगा. गोल्डन फ्लीस का एल्यूजन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. तुम्हारे राइट साइड पे नजर जरा फेरो. There's 174, there's a reference there, mark it. Super important, that's an allusion. Question in the exam, super direct. Give the allusion of golden fleece. एक मिनट पॉज करके पहले allusion पढ़ लेते हैं. The reference is made to ancient Greek legend. Alright? Fleece, the word fleece. It refers to a crop of wool. Crop of wool मतलब wool. So fleece का दूसरा word is wool. Okay? Of a sheep or a ram. Ram is a male sheep. A famous hero called Jason with his companions the Argonauts. ये लोग के गैंग का नाम था जैसे बिच्छू, स्कॉर्पियन गैंग, वैसे आर्गनॉट्स. ये लोग ने अपने गैंग का नाम आर्गनॉट्स रखा था. सो जेसन और उसके बड़ी लोग जो है आर्गनॉट्स, दे गो ऑन अ डेंजरस वॉयज टू कॉल्चिस. कॉल्चिस इज एन आइलैंड, alright, on the east coast of the Black Sea in search of golden fleece. तो पहले एक legend था that there's a ram, there's a sheep with a golden fleece which is magical. जिन लोगों ने पर्सी जैक्सन देखा है, इस स्टोरी का एक alternate version उस मूवी के अंदर भी है, बुक के अंदर भी mentioned है. alright, but this is the actual allusion. So there was a golden fleece, they were looking for it, which was fastened मतलब tied. It was tied to an oak tree. तो एक tree है, वो ओक ट्री पे एक अराउंड ओक ट्री के अराउंड there's a golden fleece, there's a ram with golden fleece tied and protected by a dragon. Alright, so it was very difficult to obtain that fleece, but Jason managed to get it along with the Argonauts, and his wife Medea also helped him. Alright, so he managed to get that, and that's the story. अब वो उसके साथ उससे ज़्यादा details important नहीं है, but जिस तरह से that golden fleece was so precious, that golden fleece was so magical, so important, उसी तरह Portia is important. तो यहाँ पे हम पोर्शिया के बाल को काटने के लिए लोग नहीं आ रहे चारों कोने से. सो डोंट थिंक दैट्स अ फ्लीस को उसके बाल के साथ कंपेयर किया है, मतलब चारों कोने से लोग उसके बाल काटने आ रहे हैं. नहीं भाई, इट्स अ मेटोनिमी, सिनेक्डकी. ओके, तो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट पोर्शियाज हेयर, आई मीन पोर्शिया. सो चारों कोने से लोग आ रहे हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए. ऑलराइट, सो गोल्डन फ्लीस हियर रेफर्स टू पोर्शिया, which makes her seat of Belmont. Seat of Belmont मतलब her residence. Alright, अगर पोर्शिया गोल्डन फ्लीस है मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग, मेटाफर, तो उसका जो घर है जहां वो रहती है, दैट्स बेलमोंट, द आइलैंड ऑफ बेलमोंट इज एज गुड एज द आइलैंड ऑफ कॉल्चिस, बिकॉज गोल्डन फ्लीस कॉल्चिस में था. ऑलराइट, सो कॉल्चिस इज स्ट्रैंड मतलब आइलैंड, एंड मेनी जेसन्स. और ये जो सारे स्वयंवर के लिए लोग आ रहे हैं वो सारे जेसन्स हैं, हु आर कमिंग इन क्वेस्ट ऑफ हर. क्वेस्ट मतलब सर्च ऑफ हर. ओ माय एंटोनियो, अरे एंटोनियो यार, हैड आई, ये हैड आई को ऑनलाइन करो. हैड आई मतलब इफ ओनली आई हैड, अगर मेरे पास चांस होता ना. सो अगर मेरे पास चांस होता, हैड आई बट द मीन्स मतलब चांस, अपॉर्चुनिटी टू होल्ड अ राइवल प्लेस, टू कम्पीट. यार ये रोडीज रेवोल्यूशन में मेरा ऑडिशन अगर हो जाता ना यार, मैं जीत क्या होगा, मैं श्योर हूं. ओके, तो बोलता है यार, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस विद वन ऑफ देम, अंडरलाइन द वर्ड देम,
them मतलब the renowned suitors who are coming to win Porsche. So अगर मेरे को बस एक opportunity मिल जाए ना, then I have a mind मतलब instinct, gut intuition. Okay, मेरे को intuition हो रहा है that presages मतलब predicts. So I have a mind which is predicting me such thrift मतलब win, victory. So मेरा मन बोल रहा है कि मैं जीत क्या होगा, बस मुझे वहां तक पहुंचा दे यार. So that I should be questionless. I should questionless मतलब no doubt. I'll no doubt be fortunate. तो बस एंटोनियो तू लैंड करा दे यार, तो मैं श्योर हूं मैं जीत क्या होगा. ओके, सो एंटोनियो बोलता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंटोनियोज रिप्लाई, इट्स लास्ट डायलॉग. Alright, question very direct. What is Antonio's reply to Bassanio when Bassanio tells him he needs money? Antonio बोलता है, thou knowest, you know very well Bassanio, that all my fortunes are at sea. सारा पैसा मेरा invested है. When I see at sea, मतलब I hope there's no one dumb enough to think that Antonio's money is डुबकी मारेंगे in the sea. It simply means all his money is invested in ships which are at sea. So neither have I money, मेरे पास ना पैसा है, nor do I have commodity. Commodity मतलब ना मेरे पास कोई goods है. To raise an immediate sum. This line is very important, okay? Present, the word present मतलब urgent. I'm again reiterating, मैंने ये पहले भी एक बार समझाया, एंटोनियो पैसे देने से मना नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है तेरे को पैसे चाहिए, मेरे को 2 महीने लगेंगे पैसे अरेंज करने में, पर बसानियो को जल्दी है. वो बोलता है 2 महीने बहुत दूर है भाई, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, नॉट 2 months लिटरली. ओके, बोलता है 2 महीने बहुत दूर है, मेरे को कल ही के कल पैसा चाहिए, कोई दूसरा आके पोर्शे को लेके जाएगा. सो एंटोनियो बोलता है यार इतना जल्दी तेरे को पैसा चाहिए तो वील हैव टू बोरो इट बाबा. Okay, so I don't have the goods nor the money to raise a present urgent sum. Therefore, go forth. Therefore, chal. Go forth matlab come. Try what my credit can in Venice do. Try what my credit can in Venice do. You guys are getting the hang of the language? ये उल्टा grammar है. My credit can in Venice do simply becomes let's try what my credit in Venice can do. Credit मतलब reputation. So let's see पैसा उठाते मेरे reputation पे. That shall be racked. Racked मतलब stretched. और ये that जो है उसको अंडरलाइन करो. That over here is Antonio's reputation, credit. This credit of mine, this reputation of mine will be racked, will be stretched to the uttermost. Uttermost मतलब to the extremist parts of Venice. मतलब दूर दूर तक वेनिस में लोग मुझे जानते हैं. तेरी तो कुछ औकात नहीं है, तू पैसा मांगने जाएगा कोई तेरे को देगा ही नहीं, बिकॉज तू बहुत बैड रेप्यूटेशन है बसानियो की. Whenever he has borrowed money, he's never returned. But Antonio's reputation is very respectable. Everyone knows him. All right. So let's go. And I'll make sure that I furnish you. Furnish matlab send you. Look at the word furnish. Furnish matlab send. I'll send you to Belmont, to fair Portia. Go presently inquire. Therefore, go jaldi and find out. And so will I. मैं भी थोड़ा जान पहचान से बात करता हूँ. Let's see where the money is. And no, I know question make. मतलब I'm very sure. I know question make. मतलब I'm super sure that I'll have it. Circle it. It is the money that Bassanio needs to furnish him to Belmont. Of my trust, I'll get it for you out of my trust, out of the trust that people have for me, or for my sake. On my people will give it on my name, on my reputation. And we are done. Yay! Act 1, Scene 1 khatam ho gaya, guys. I cannot teach you at the same speed that your schools teach you. Alright, we are going slow. बट मैं बहुत श्योर हूँ अगर तुम लोग एक बार सारे वीडियोस देखोगे और ये रिकॉर्डिंग सुनोगे, ये एटलीस्ट सीन पल्ले पड़ जाएगा. देन 10th स्टैंडर्ड तक कोई टेंशन नहीं है. ऑलराइट, सो डोंट हेस्ट मेक्स वेस्ट, यू नो. सो जल्दी जल्दी करने का टेंशन मत लो, बट ठीक से करो यार ये सीन को. ऑलराइट, I'll be posting Act 1 Scene 2 soon enough. Alright, just study this, listen to this. Oh, ये बाय द वे मैंने ऑल राइट कितनी बार ही बोला है ये सीन के अंदर. सो आई एम रियली सॉरी तुमको बार बार. अगर तुम काउंटिंग करने बैठे कम से कम 400 बार मैं बीच बीच में ऑल राइट बोलता हूँ. दैट्स बिकॉज मेरे पास और कोई फिलर नहीं है बात करने के लिए. आई होप आई सी यू गाइज सून यार. आई डोंट लाइक टीचिंग लाइक दिस एट ऑल, एंड आई होप नन ऑफ यू फेल अस्लीप. कोई सो गया क्या भाई? जाग जाओ प्लीज. ऑलराइट, ये देख वापस बोला. ए यार, आई एंड इट. आई लव यू. वापस पढ़ो. कुछ भी डाउट है जूम पे पूछो. जूम लेक्चर इमीडिएटली नहीं हो रहा है तो डाउट्स मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो. बिंदास पूछो. डू नॉट वरी अबाउट इट. ऑलराइट, देयर यू गो. आई एम गोना स्टॉप सेइंग दिस. गुड नाइट. बाय. ओवर एंड आउट.